And all of you 23,000 AUites watching us virtually, this is the big moment that all of you were waiting for. It's so wonderful to have you both here. And I'm so looking forward to talking to both of you. संजय सर, पहले सवाल आपसे. हाँ जी. सवाल ये है कि ये जो कैंपेन है, बदलाव हमसे है. How did it come about? So your question is around why Badlav? Yeah. So I think इसका आंसर तो आमिर साहब ज़्यादा देंगे, but मैं पहले वाली 2-3 मिनट बाद बोल देता हूँ कि as we all know कि we started a journey 25 years back. So I come from a very humble family, but started NBFC without money. So पहला बदलाव तो वहीं आ गया था. But you know, in 2014 and 15, when regulator thought they need to give new licenses, but licenses can't go to Mumbai. Licenses can't go to Delhi. So they brought a badlav saying this ki they need to give 10 licenses for those people who can actually can do a lot of badlavs in unserved, unreached markets. And we got the license in 2015. We started our journey in 2017. And in last 4 years, we have built a lot of badlavs in our whole banking practices. You know, जो हम बोलते हैं ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का पहला जो सवाल आता था, मैं एज ए यूजर बैंक करता था, तो इतनी स्लिप भरवाते थे कि काम क्यों करना है ये समझ में नहीं आ रहा होता था कि एप्लीकेशन भरो. तो मैं कहा हमारे बैंक में एप्लीकेशन नहीं भरेंगे हम, राइट? सो वी ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस एंड वी वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इंटरनली टिल वी मेट आमिर साहब एंड कियारा. एंड हमने उनको बोला कि सर देखिए हमने इतने काम किए हैं, आई नो कि आप बैंकर नहीं हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से नरेट कर सकते हैं. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिटिंग हियर, बदलाव हमसे जो वर्ड है वो हमारा वर्ड नहीं था, वो तो हमारा कैरेक्टर था और उसका नाम दिया है आमिर साहब ने और विद द हेल्प ऑफ उत्तम. सो थैंक यू सो मच सर. हमको डिस्कवर ही नहीं हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं. सो यू एक्चुअली पुट ए वर्ड ऑन इट. एंड फिर नीतीश साहब बैठे हुए हैं. सो ये बदलाव हमसे है, वो हम करते आ रहे थे, बट नाम पूरी आई वुड से कि हमारी मार्केटिंग टीम है, हम सब ने मिलके जो बनाया इज अमेजिंग, राइट? बट वी मीन इट. और आप देखते जाओगे आगे जाके कि ये खाली वर्ड नहीं है. जैसे पूरी लाइफ आमिर साहब ने जैसे जी है, आई वुड लव कि हमको एक मौका मिल रहा है टू बिकम एजेंट ऑफ चेंज, राइट? एंड वी रियली वांट टू ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स. और अब इनके साथ बैठे हैं तो इनके साथ रहना है तो करना ही पड़ेगा. जी. आई डोंट हैव अ चॉइस नाउ. So trust me, you're going to be with him forever. Yeah. So sir, ज़्यादा बोल दिया, आपको इन सर से पूछना है. नहीं सर, बिल्कुल आप ही का स्टेज है सर, आप जितना मर्जी बोलेंगे तो चलेगा. In fact, if one were to think of a sobriquet to describe Aamir sir, I would pick Badlav, a man of many, a Badlav, a man of many firsts. Correct. So what you're saying, agent of change, Absolutely. It applies to him. Absolutely. Sanjay sir, I'm going to continue with you here. If you ask me, I think it's a perfect fit. Brand and brand ambassador. It's a perfect fit, isn't it? But I'm still going to prod you very curiously. Why Aamir Khan? Why Kiara Advani? अरे बाप, ये तो इससे तो कोई सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है. You know, because why आमिर, मतलब ये आमिर से पूछो why you? वो तो मैं पूछने वाली हूँ साहब. I'm going to ask him. मैंने सुना है कि राजा को चॉइस होती है, वो सेलेक्ट करे प्रजा में से. प्रजा तो ना सेलेक्ट करता है राजा कौन बनेगा. So हम तो कंज्यूमर हैं, right? So I would say it was very obvious. देखिए पर्सनल साइड पे मैं इनका शुरू से ह्यूज फैन हूँ. सर मैं भी. बट जब हम बात कर रहे थे और टीम भी यहाँ बैठी हुई है, आई थिंक द टॉप ऑफ द लाइन हु कैन एक्चुअली, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर कंसेप्ट कि उन्होंने हमको बोला कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को कि जैसा आप काम करते हो ना सर, वैसे एक ही आदमी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है हिंदुस्तान में. तो आई होप कि वो हमारे सामने था, ऑब्वियस थी और बहुत रिजोनेट करते हैं. बिकॉज पहली पिक्चर सर की 88 में आई थी, मैं उस वक्त पढ़ रहा था. फिर 95 में रंगीला आई, 95 में यू चालू हुई. तो इनकी 25-30 साल में इवॉल्व हुआ, हम इवॉल्व हुए एज ए पर्सनैलिटी, एज ए बैंक, एज ए प्लेटफॉर्म. और कियारा, यू नो, बिकॉज अगेन वी थॉट कि हु इज वाइब्रेंट, हु इज न्यू, हु इज डूइंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जो हमको रिजोनेट करती है. 5-6 साल का इनका कैरियर है, 5-6 साल का हमारा बैंक कैरियर है. यू नो, आई थिंक शी हैज ए अमेजिंग फैन फॉलोइंग. मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो बोलती है कि साक्षी आई है. so you know, you can resonate, you know. Yes. If somebody is known for some character, you know,
it's so good for them to accept our invitation because, Yes. again, I'd say it is our privilege, our own, fortune that, both the people have said yes to our campaign and they are living it. So I hope जब आप campaign देखेंगे, it will be one of the best campaign, I would say, the way both the people has put in their effort, commitment, and मैं तो actually मैं बड़े डर डर के पूछा आमिर साहब से कि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे क्या? So क्यों नहीं आएंगे भाई? तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक्चुअली में आज भी शायद डेट तो आपने आपने बताया कि कोई बदलाव सर ले लिया है आज वापस आफ्टर पेंडेमिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो अब होती रहेंगी Many a बदलाव every single year from him. Yeah. In fact, आपने बात करी इनकी पहली फिल्म की, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक 30 सेकंड्स के लिए जाऊंगी और इन्हें बताऊंगी कि मैं 10वीं कक्षा पास कर चुकी थी सर जब आपकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई क़यामत से क़यामत तक, एंड जो मेरे 11वीं और 12वीं में अत्यंत ख़राब नंबर आए वो आप ही की वजह से थे, बिकॉज आई कुडंट थिंक बियॉन्ड आमिर खान व्हेन आई वाज इन 11th and 12th. थे गंदे नंबर आए थे मेरे. Huge fan of yours, sir, since then, and I'm so delighted to be working with you now. Okay, I'm coming to you now, sir. I've asked him why Aamir Khan and why Kiara Advani. It's not. Can I, sir, use your mic? I think it's been set to. has to be some to improve the voice quality, right? Yeah. This was my mic, sir. Actually, No, actually, we need a monitor here, Yes. which I don't think we have. The monitors are, sir, placed So it's behind us. difficult to hear because it's bouncing and coming. जी, monitor उधर है, sir. Ah, तभी, okay. जी. Okay, that's better. So, sir, it is not very often that we see you put your weight behind a brand and its philosophy. But you've chosen to come on board as brand ambassador for AU Small Finance Bank and put your weight behind our brand, our philosophy, our people, and our organization. What made you take this decision, sir? Well, actually, in the first meeting itself, जब मैं पहली बार मिला संजय जी से, तो दो चीज़ें हुई. एक तो जब जैसे जैसे मुझे पता चला इनकी जर्नी के बारे में और किस तरह बैंक शुरू हुआ और कैसे कैसे ये आगे बढ़े, तो वो कहानी ही मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी. और जब मैंने देखा कि इनका क्या फंडा है लाइफ में, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो भी एक बैंकिंग के जो प्रथाएं होती हैं जो चली आ रही हैं, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ लॉजिक नहीं होता. हो सकता है कुछ साल पहले उनका लॉजिक हो, अब नहीं है. तो संजय जी और उनकी टीम जो है वो इन सारी चीज़ों को चैलेंज करने में फॉर बेटर सर्विस फॉर पीपल, दे आर लीडिंग इन दैट, इन फैक्ट आई वुड से. तो जो कदम आपने लिए, मुझे लगा कि यार ये बहुत सही दिशा में जा रहे हैं ये लोग. और इसके अलावा मुझे संजय जी बहुत पसंद है. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं इंसानों से जुड़ता हूं. Correct. तो जब आप इंसान सही चुनते हैं तो फिर वो काम उसका सही होता है. जी. तो वो एक कनेक्शन होता है. I know what आई you थिंक mean. हमारा कनेक्शन जुड़ गया आपकी टीम के साथ. आपकी जो एजेंसी है वो बड़ी अच्छी काबिल टीम है, आपकी मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है. तो वी काइंड ऑफ क्लिक्ड, ऑल ऑफ अस क्लिक्ड टुगेदर एंड इट जस्ट हैपेंड. तो आई थिंक आई एम रियली, एंड कैंपेन में शूट करने में भी बड़ा मजा आया हम लोगों को. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद कियारा फॉर द फर्स्ट टाइम. या Kiara, I'm coming to you now. I was told that you signed on the dotted line really fast, and we're really happy to come on board. What made you decide to come on board as brand ambassador? Well, firstly, a very good evening to everyone, and apologies for my little mask fiasco over there. I'm sorry to the media who didn't get their image. We'll surely take a picture after. उनकी बाली का डिजाइन बड़ा अच्छा है. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक दफा उसमें कोई चीज अटक जाए निकलेगी नहीं. Thank you, sir, for helping me with that. So I'm going to go back a little bit. Yes, of I course. remember at the time when, the brand came to me, I was, as you know, I've just started off my career about 6 years it's been in the industry. And I've just started earning my own money and understanding my finances. And I would always rely on my father to do all my banking. Anything, leave it to my dad. I had no idea about my bank or what I was doing or anything. And it was first the thought behind the campaign which connected with me. Badlav humse hai. I think I believe in that completely. Change is the only thing constant, and it should begin, Yes. we make that change. And Yes. that really connected with me. And then sitting with the team, with Sanjay sir, and understanding how the bank has pushed the envelope and made
it's so consumer friendly. It's so easy for people like me, my generation, to, everything's literally a click on your phone. Yes. And the services that they're offering, from monthly interest plans to every single thing, the AU 0101 app, everything just connected with me in a way that I felt like this is what I need. And if I need this, then I want to be a part of this and go ahead. And then, of course, the cherry on the icing was to work with Aamir sir and Nitesh sir. Absolutely. I bet it was. So I can truly say it has been like one big family. We've come together, everyone with the same ideologies, and here we are. Wonderful. It's wonderful to have you on board, really. Thank you. My pleasure. संजय जी, अब आप बताइए, हम लोग तो सब बहुत excited हैं. The screens are all set. What's the game plan ahead? देखिए, मुझे मेरा दिन तो वैसे ही बन गया. वो जो आमिर जी ने बोलते ना कि मैं आपको चाहने लग गया हूँ. You know, so I think अब game plan बचा ही गया है. But on a serious note, I think the whole plan, the campaign, which we have designed, and of course the whole launch of digital properties of AU, has really made me much excited, much thrilled, because we know in last maybe around 6 quarters how the world has been suffering from pandemic, and there is lot of what you call sadness around us. But team has done brilliant job in last 6 quarters, seeing this transition from physical to tech. The bank has to cope up with that whole change, right? And my team is there. I'm really kudos to them that they have done, this property has come so beautifully, which is our, of course, you would be seeing that 010 is a binary number. We have designed it internally. It is not created by any team. We designed it internally. Of course, logo has been designed by contract and the team. And that both has come up so well. And then, we're done with the super app. We're done with credit card. We're the first bank in terms of SFB has done our own launch. We have done our own QR codes, which is the flavor of the, as of now, because a lot of UPI transition happens to that. We have done video banking. Can you imagine, I have seen the ages when we need to go to the bank, actually meet the customer, meet the bank manager, ask him for the form, then you need to bring 2 guarantors, to know you so that you can open the account. Right? It was just 20 years back. Now through video banking, and thanks to the regulator, where they allowed us to open account from your drawing room. Like we are saying, you're saying now, work from home, right? We are saying banking from home. Bank from home. So I think brilliantly done by our team. It's a start. There would be a lot of challenges, but at least AU Bank in its 4th year of operations, or maybe in 5th year of operation, has become the catalyst of the digital life of this country. Absolutely. And now with this campaign coming in, so with Aamir Saab and Kiara leading the whole transition, in terms of how we have done over the years and what we can do in coming times, I would, when you see the whole films today, you will yourself will know that what is coming for us in times to come. And we can only promise you that, AU will always strive for this incremental innovations, because आप daily सीखते हो यार. मतलब मैं शायद आज भी कुछ सीख के जाऊँगा आप सब लोगों से. Can I implement it in a bank for your betterment of few people, right? And as we always say nowadays that, let's make a world a better place to live, right? So we always say, let's make our banking a better experience to serve you better, right? So this is how our thinking is, and the entire 22,000 people who are on the online sitting here, I am actually saying on your behalf that, AU will strive for every innovation of this era, to make us better, and make your life better. Thank you so much. Yeah to that. Thank you so much. Pleasure. All of you 23,000 watching, that one is for you. All right then, let's begin to reveal the campaign bit by bit, shall we? We'll begin with the first film, the monthly payout film. Please play it for us, twice. वो क्या है जो आता हुआ अच्छा लगता है लेकिन जाता हुआ नहीं? एक और हिंट, ये चीज जाती है हर महीने पर आती है 3 महीने में एक बार. ब्याज, इंटरेस्ट. लोन पे तो इंटरेस्ट बैंक हर महीने लेते हैं, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं 3 महीने में एक बार. ऐसा क्यों? एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने.
मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। वो क्या है जो आता हुआ अच्छा लगता है लेकिन जाता हुआ नहीं? एक और हिंट, ये चीज जाती है हर महीने पर आती है 3 महीने में एक बार। ब्याज, इंटरेस्ट। लोन पे तो इंटरेस्ट बैंक हर महीने लेते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं 3 महीने में एक बार। ऐसा क्यों? एयू बैंक के रुचिका, ये बहुत कॉमन सेंस है। तो देखिए, इतने सालों तक हम दे रहे थे हर महीने, तो लेते क्यों नहीं है भाई? So we started our bank in April 17, Aamir साहब, and we discussed it lot कि भी हम देना भी तो चाहिए ना यार, जब ले रहे हो तो दो भी यार। बस so simple actually। एंड मैं जितने भी यहाँ प्रेस मीडिया के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनको बोलूंगा कि आप प्लीज अपने बैंक अकाउंट चेक करिए कि लास्ट जुलाई महीने का इंटरेस्ट आया था नहीं आया था, और आप चेक करिए एयू के कस्टमर्स में उनका आया है। सो दैट्स द वे वी वांट टू से कि ऐसा क्यों। मुझे लगता है ये बहुत नेचुरल है। ये सारी चीजें जब आप बता रहे थे मुझे, जब हम लोग की पहली मीटिंग में थी, तो आई वाज थिंकिंग कि ये सारी चीजें सिर्फ आपको लोगों को बतानी है, बाकी और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये इतना कॉमन सेंस है ये चीज, और इतनी सीधी है। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आपने ये शुरू किया। So, Geetika, I would like to have 2 minutes हाँ here. जी सर, you know. please, please. संजय अपने मुंह से बात नहीं बता पाएंगे ठीक से ना, because we were the conduit to this journey. So when we converted ourselves from NBFC to bank, and we were designing our products. Uh-huh. So we were NBFC guys, for last 25 years. Yes, sir, I know. And we got the bank license, which is the most prestigious platform of the world, you can say, in India. And our kind of humble background guys getting banking license is a God-sent opportunity, You just can't dreamt of. So I think it was a license well given. It's a license, for our kind of guys. Well because deserved. because license doesn't comes like this, I know, sir. It was a legacy was there of 25 years working on ground, financial inclusion, serving customers. All those parameters were there. So when we were designing the product of this saving account, so a lot of new people have joined us from other banks, sir. So everybody pitched for quarterly interest, sir. It's all obvious. And out of a Sanjay, जैसे आपने बोला ना कनेक्शन, सर ये कनेक्शन कोई 50 साल पहले ही हो गया था, because he is always a man of ऐसा क्यों, challenging status को, और आपकी भी सर हमेशा ऐसे ही है ऐसा क्यों. Then he immediately said, we were there, कि यार मैं 25 साल से लोन दे रहा हूँ, EMI हर महीने लेते हो, आप इंटरेस्ट हर महीने लेते हो, ये 3 महीने से क्यों? And nobody was having answer. बोला सर वो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला. नो 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 नो, मैंने इतने साल लोन दिया है, मैंने हर महीने EMI दिया है, मुझे ये मंथली देना है. And everybody was stunned in that meeting कि सर ये कैसे? And we did that. And Uttam, just to tell you कि you will see industry will adopt this. Yes. So yes. मैं बोलूँगा कि हमने अप्रैल 17 से किया हुआ है to my friends here, और people might start tomorrow. So ऐसा क्यों बदलाव आ रहा है? बदलाव हमसे है संजय सर। तो अगर आप सबको वो नहीं मिला इंटरेस्ट, तो जल्दी से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स बन जाइए। सिंपल नहीं? Okay. All right. I'm now going to play for you all an audio visual that will share with you the extensive features of AU 0101, the super app that is, as we speak, changing the digital landscape of India's banking industry. It comes armed with convenience, speed, flexibility, security, extensive features. Would you all like to take a look? Yeah? Yeah. Let's play the audio visual. 0101 launched recently, changing the digital landscape of our country. And if you all were watching the audiovisual carefully, you would have noticed a few slides there about video banking. Yeah? So I'm now going to play for you a film on video banking, and then I'm going to be talking to Sanjay ji once again. Let's play the film. प्राचीन समय से And the past year, what the world has witnessed is a great transformation. And I always say this at every second event that I do, that the corporates, the organizations, the brands who've kept pace with this transformation that we've seen over the last year are the ones who will head into the future. Video banking. At one time, it was unfathomable, unacceptable, and now is the new norm led by you. Your thoughts on the same? No, if you take my view, then I would say the video banking and the video KYC, the watershed movement in the Indian banking industry. Because, Well said, sir. we never heard of, यार बैंक का आदमी बैंक ब्रांच में जाएगा, उसमें अपने KYC बताएगा, फिर वो उसको चेक करेंगे, फिर अकाउंट खोलेंगे. I think minimum time
for you to think you need a bank account and a bank account opening in still in this world is also at least 3 days. सोचने से, सोचने Yes, से, approximately, right? yes. But now आपने सोचा, तो download AU app, go to the one of the icons, video bank, take it, and you find the banker there. So, and then just open the account. So, in my opinion, now from thinking to have a bank account with AU Bank at 7%, you know, you need to be just a click away from the Play Store and just do it, right? Ji. So now, and then you can transfer the money, you can deposit the money, you can do anything. So where is the requirement of a bank branch in next 10 years then? You know about millennial, right? Yes. You know about the next generation. They are doing everything on the go now, right? And I'm so thankful to the whole regulator and of course the government of India to allow this. This is not an easy step. Require a lot of courage from Yes, them sir, also. it's a very to- futuristic because decision. banking is not easy. Banking is Yes. a high regulated business. Yes. You know, but the way they are thinking, you know, is so good for me, people like me who just started the bank. Ji. So I think this video banking is still a very small word in the banking industry, but we already put around 100 video bankers in AU, and those 100 bankers are itself is a one branch, in my opinion, because they will open the account, they will do the payments, they will satisfy your queries. So you don't actually have to move even from your comfort zone. Yes. आप सोते हुए करिए, सर ने तो मतलब मुकुट लगा के कर लिया जी. था. So I hope कि so Sir- video banking is next big thing in this Indian banking for And me. you're leading the way. You're leading the way. Yes. एक और बात है जो हम सब ने शायद सोची नहीं है. That's also a very sustainable model of operation for Correct. for our planet Correct. Earth. Correct. It's the way forward. Virtual operations. Amir sir, आपसे पूछना चाहूँगी कि I was told you were laid down with COVID for a bit, and then you had to virtually organize a lot of your work, through video conferencing. How was that experience? Was it a first-time experience for you? And now, are you addicted to it? How does it? या नो पहले तो मुझे आदत नहीं थी वीडियो कॉल्स में लोगों से मिलने की, बातचीत करने की, लेकिन अब ये लॉकडाउन्स की वजह से, कोविड की वजह से अब वो आदत पड़ गई है. अब तो हम लोकेशन भी देख लेते हैं. Yes. हम लोग घर पे बैठ के, हमारा असिस्टेंट जाता है लोकेशन, वो वीडियो कॉल करके हमको पूरा दिखाता है. तो सडनली यू रियलाइज कि एक्चुअली वीडियो कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ For a थिंग्स, lot. जो जिसकी वजह से अब आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. तो डेफिनेटली इट इज मच मोर कन्वीनियंट. या Yes, yes. It saves time, it saves money, it saves resource, and it's so much more easier. Kiara, what about you? How is this whole new world of virtual conferencing video working for you? I feel like my generation, we've grown up on this. So Yes. this is just what we needed. It's convenient, it's flexible, it's, as Sir said, it's, customer friendly. It's just what we needed, just what we wanted, and it's making our life so much more easier. I like the way you're again and again saying our generation. It's making the rest of us. या our So generation, what she our means is our मतलब generation. पता नहीं बड़ा कॉम्प्लेक्स दे रहे हो हमको, और सर भी बोल देते हैं. Just kidding. Okay. बट so एक ही है डिस्क्लेमर कि हर कॉल पे आपको आमिर खान साहब नहीं मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे. कभी-कभी तो मिलेंगे. वो आप चांस लो लाइफ में, वो चांस लो आप लोग. कभी कभी मिल सकते हैं. And I will request Kiara also to be there, as a young generation, a millennial. जी, चलिए, let's move towards the next film. Can we now play the deposit slip film, please? Let's show them You're very the best, campaign sir. bit by Your bit. हाँ, ये मेरी फेवरेट फिल्म है. हाँ, जी सर, अच्छा. बताइएगा क्यों सर इसके बाद. लाइफ में बहुत सारे हम उसी ब्रांच में बैंकिंग करेंगे. आमिर सर, एक्चुअली why मुझे was this लगता है your कि ये favorite film? इतनी इम्पोर्टेंट चीज है. देखिए, जैसे जैसे आप छोटी जगहों पे जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो शायद पढ़े लिखे ना हो, उनको तकलीफ होगी उस भाषा में भरने के लिए. तो ये एक इतनी कॉमन सेंस चीज है जो आप अपनी बैंक में लाए हैं कि कोई भी इंसान जब बैंक में आता है तो अब उसको ये स्ट्रेस और टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ भरना है, वो भी ठीक से भरना है. ये मेरे लिए कोई कर लेगा, बैंक मेरे लिए ये सारी चीजें कर लेगी, मेरा जो है काम वो हो जाएगा मेरा फटाफट. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, वेरी बिग सर्विस. Yes, it's great convenience. तो ये तो जितने बैंकर बैठे हैं ना मेरे, हमारे जितने ओल्ड आए थे, तो मैंने इनसे आते सवाल पूछा कि मैंने कहा यार ये तुम पैसे की स्लिप भी बनाते रहते हो आदमी से यार, मतलब 2-2 घंटे तो बेचारा पेन ढूंढता. एक्चुअली में कहाँ से था, मेरे मन में आया था कि जब हम छोटे थे, जब बैंक जाते थे, तो एक वो पेन तो आप ले जाना भूलते ही थे हमेशा. करेक्ट, पेन तो होता ही नहीं था, और जो वो पेन वहां लगा रहता था वो आज तक चला ही नहीं, वो धागे में टंगा. वो आज तक वहीं लटका हुआ है.
तो मैं कहा ये दो काम मुझे अपने कस्टमर से नहीं कराने। तो मेरे बच्चे बोलते थे कि सर इतना काम आप हमसे कराओगे? तो मैं कहा पैसे उसके हैं, अकाउंट उसका है, और काम भी वही करे, काम तो अपन करेंगे ना भाई। सो आई थिंक दैट कम वेरी नेचुरली। एंड सर ये गांव में जितने भी मेरे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये स्कीम गांव में इतनी हिट है बिकॉज यू नो इफ यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस टू कस्टमर ही विल अवॉइड यू, ही विल अवॉइड यू। दैट्स माय ओन सेंस। जितना हम उसको बिना बात करे काम करेंगे, तो हमारा डिजिटल ऐप भी वही बोलता है, डोंट मीट अस, डू एवरीथिंग ऑन डिजिटल ऐप। और यदि आप बैंक आ भी गए तो भी आप हमसे कम बात करिए, हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करेंगे। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, यू नो। आप जितना भी उत्तम जी, बट दिस इज बेस्ट सर। मतलब आपने जिस तरीके से आम आदमी का दर्द बताया ना सर, एज ए बैंकर हो सकता है उनका भी दर्द हो। नहीं, क्या है? आई वाज टेलिंग नितेश जी कि ये बेस्ट टीम है। इसमें नितेश जी ने जो वो पूरा जो किया है, क्योंकि हाँ। वो समझ गए कि इसको एग्जाम में बहुत तकलीफ होती थी आमिर को, तो उसका दर्द निकल के आया। उत्तम जी, आपसे पूछना चाहूंगी that this whole thing is all about customer first. समझदारी, So, जिम्मेदारी, first- ईमानदारी से आप customer first की अपनी philosophy निभाते जाते हैं, and it all begins from the top, and that's why every soldier, all the 23,000 watching us virtually, also implement customer first on ground every single day. Tell us more about this So, philosophy. थैंक्स गीतिका। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक 25 साल की हम लोग ने जो ग्राउंड पे काम किया, जो संजय ने बोला, हम लोग वही अगेन आई विल रिपीट कि 25 साल से हम लोन दे रहे थे, और हम गांव में, मतलब वी आर इन टू हिंटरलैंड्स आमिर जी, मतलब गांव में हम शुरू से, इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं आज। और वहाँ हम जब लोन देते थे तो कस्टमर को कभी पता नहीं था कि उसकी ईएमआई कितनी है, कितना लोन अमाउंट है, मैं कहाँ ऑफिस में जाऊँ, कैसे रिसीट भरूँ ईएमआई देने के लिए। तो हम शुरू से 25 साल से सर लीवर्स, हम कस्टमर से कभी कोई उनसे रिसीट नहीं बढ़ाई हमने, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि उस गांव में उस बेचारे को लिखना ही नहीं आता, उसको एप्लीकेशन बोलना, एक डोर खोलना उसके लिए एक तकलीफ है, उसके लिए एक डर है। तो एक लर्निंग वहाँ से आई, जब हम बैंक बने तो वहाँ भी आए कि हम कस्टमर से कोई रिसीट नहीं बढ़वाएंगे। तो एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट कि सर ये कंप्लायंस नहीं होगा, दिस इज अगेंस्ट। एंड संजय ऐसा क्यों, और बदलाव ऐसा क्यों, यानी कि नहीं यार हम तो नहीं बढ़ाएंगे, हम ही मेहनत करेंगे। एंड सर आपने इसमें सोल दे दी है। हम कर तो रहे थे, संजय ने बोला हम कर तो रहे थे, लेकिन आपने हमें आत्मा दी है इसके अंदर में, कि आप जो कर रहे हैं दुनिया को पता चले और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। थैंक यू। Guys, we mean it ना। वहाँ मेरे जितने दोस्त बैठे हैं, you mean it ना, हम स्लिप नहीं भरेंगे। हाँ। चलिए, let's play the next film. Technical crew, let's play the film for home branch. Bank start. Offered Kiara job, मतलब alternative. अच्छा. But I'm Let's hope already she on the doesn't job. need it too soon. She's doing pretty well where she is. She's blazing a new trail. Okay, संजय जी, मैं आपसे ये इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि 750 geographical locations तो हैं ही आपके all across the country, but ये जो concept है, this is giving your customers unprecedented ease of access of banking services. Tell us more about it. अरे बाप रे। So what happened कि as उत्तम टोल ना, हम बैंकों से बोरो करते थे, तो एक ब्रांच होती थी, like I don't want to take name, but यदि ब्रांच जयपुर में है and somehow you're in Bombay, तो आप उस बैंक में उस कॉन्फिडेंस से नहीं जा पाते थे, बिकॉज आपको लगता था कि वही ब्रांच जो जयपुर में है और वहीं पर जो एक श्यामलाल नाम के एक बैंक मैनेजर हैं, उनसे हमारी दोस्ती है। तो इतनी बड़ी बैंक फ्रेंचाइज होती है, देयर इज यू नो वी कॉल्ड एनी बैंकिंग, यू नो एनीवेयर बैंकिंग, जिसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज सिस्टम आ गए हैं, टेक आ गई है। व्हाई दिस गैप यार? फिर क्या होते थे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ काम करोगे तो कम खर्चा है, यहाँ करोगे तो ज्यादा खर्चा है। अरे तो भाई मैं बैंक का कस्टमर हूँ या ब्रांच का कस्टमर हूँ? तो ये मैं अपने आप से पूछता था। तो यू नो व्हेन वी स्टार्टेड अ बैंक, हमने बोला यार कस्टमर बिलोंग्स टू बैंक। वो ऋषि जी बैठे हैं, हमारे ब्रांच बैंकिंग हेड हैं, इनसे पूछो एक कस्टमर आता है वो कितना तकलीफ, मतलब कितने मुश्किल से मिलता है हमें, राइट? और जैसे आता है ना, उसको बोलते तो ये ब्रांच का है भाई तू। अरे क्यों भाई? लेट हिम द bank customer, because if he is a bank customer, then we can serve him holistically, right? And you can't be differentiating around charges. ठीक है, आप थोड़ी बहुत बात करिए, इधर उधर लगा सकते हैं, लेकिन you have to be inviting, you have to be welcoming. जी, absolutely. मेरे हिसाब से तो यार मतलब कस्टमर आ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, जबकि बैंकों में थी, अरे तुम उस बैंक का कस्टमर है क्या, उस ब्रांच का, जाओ 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 बाहर जाओ। अरे रुक भाई, I'm a customer of you. But I think that concept we really want to bring, and I want to request my team
कि भैया मतलब संभाल लेना इस बात को, कहीं मतलब टारगेट के चक्कर में कहीं इधर उधर कर दो, लेकिन संभाल लेंगे सर। let's honor customer, then his whole thing behind him. उसे मतलब नहीं हमको कस्टमर से मतलब है, right? I think that come from that background. जी, I'm sorry मैं आपको बोल कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ऋषि जी संभाल नहीं लेंगे, दौड़ा देंगे। अब आपको कोई बोले कि आप राजस्थान के हो, नहीं, मैं और आप बिल्कुल आपकी जैसे ही हूँ। हाँ, हाँ, नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी अलग मीटिंग शुरू कर दी। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। Okay, let's quickly play the next film, the credit cards film. Let's watch this. वो अच्छा ही है। हर आदमी के पास होता है हर आदमी के पास होता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डेबिट कार्ड और खास आदमी के पास होता है क्रेडिट कार्ड। ऐसा क्यों? क्रेडिट कार्ड पे तो सबका हक बनता है। एयू बैंक क्रेडिट कार्ड, एक खास कार्ड आप सबके लिए। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। कह रही हूँ ना मैं ये नहीं पूछूंगी कि ऐसा क्यों, मैं पूछूंगी नहीं, ऐसा मैं- कैसे मैं- हुआ। मैं बताऊंगा। ऐसा कैसे? मैं बताऊंगा। देखिए, इंडिया में डेबिट कार्ड है 80 करोड़। सर 80 करोड़ डेबिट कार्ड हैं, जो क्यारा ने भी बोला कि डेबिट कार्ड, आधार तो 130 करोड़ ही है। तो मैं डेटा बता रहा हूँ जो क्यारा बोल रही हैं, 130 करोड़ हमारे आधार है, 80 करोड़ हमारे पास डेबिट कार्ड है। एंड क्रेडिट कार्ड कितने हैं सर? एनी गेस? 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ लोग हैं और 6.5 करोड़ है खाली। 5 करोड़? दो तीन तो आपके पास ही होंगे। तो 6.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं इस देश में। If we, and I'm actually looking that India will grow by at least 8% north in next 10 years. So हम जितनी खुशहाली इस देश में आएगी, तो ease of payment कैसे आएगा? डेबिट कार्ड यूज करना थोड़ा आदमी को लगता है कि he exposes his whole banking to the fraudster, right? तो क्रेडिट कार्ड is a limited liability on a customer. जितना लिमिट है उससे ज़्यादा मिसयूज नहीं हो सकता। एंड द मिलेनियल, रात को ई-कॉमर्स करनी है, एजुकेशन को टेक यूज करना है, खाने का ऑर्डर देना है, पिक्चर देखनी है, शॉपिंग करनी है, तो उनके बापू ने उनको खाली क्रेडिट कार्ड ही दे रखा है, बिकॉज दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। डेबिट कार्ड देंगे तो सारा साफ कर देंगे। सो इन माई ओपिनियन क्रेडिट कार्ड इज मस्ट फॉर एवरी बैंक, एंड इन माई ओपिनियन वी आर लेट, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द टीम एंड दी होल सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स कि उन्होंने हमें 4.5 साल में रिकॉर्ड टाइम पे हमारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इज वन ऑफ दी, I won't say one of the best. It's a journey, but you see the color. I think Kiara, you show the pink one. The pink one is for you. The blue one's for me. You know, so I think that's the way we have built it, sir. And red one is for you, sir, because king hai aap. So you know, this is how we have actually built it. The green for this. So there's a lot of emotions around it, lot of utility around it, and you will see this card coming off very well in times to come. Thank you. Wonderful, sir. Wonderful. Chaliye, let's play the next film, the QR code film. है कुछ खास, ऐसा क्यों? So again, Gitika, now we all know that QR and this UPI payments is so convenient and so simple in our life now. It's imbibed in our life now. You know, carrying a cash, this pandemic has taught us a lot of things, you know, and this all government initiatives. Carrying a cash and giving cash is, you know, out of mind now. So Yes. QR and UPI payments and this NPCI is come up with so much of, I think we're the largest in the world. UPI transactions, QR transactions, we are the largest in the world, Aamir sir. So which is a very obvious for AU also to be in this QR code. Why we are different this? We are not just giving this QR for the payment. Since we are serving MSMEs. Yes. Small merchants, you know, Yes, yes. for last 20 years, we are giving loan to them. They don't have access to credit. They are unserved and unreached markets. They don't have income documents. And we are serving them with the loans for last 20 years. So what we have, what Kiara said, you get your QR with so much of other business benefits. So we are providing them loans also with these QRs. Instant loans to those customers. कि आप merchant हैं, आपके पास customer आ रहे हैं, transaction कर रहे हैं, Wow. and you get immediate limits also, credit limits also. Oh. So that's with the business proposition So for them. it's a step ahead Yes, even in yes, this. it's not just a payment. Oh, wow. So that's why we have come out with this concept of QR. And thanks, Kiara, for giving this life. इसीलिए आपका QR कोड है कुछ खास। Yeah. Thank you. Okay जी।